Very good afternoon, students. Today, I welcome you all to attend a Master Live session wherein we are going to talk about IELTS Writing Task 2. And particularly, we are picking out a specific module and a specific parameter. Now, let's see what parameter are we about to discuss here today. The parameter that I am going to take up today is grammatical range and accuracy. So, if you are already into your IELTS preparation and you are very well aware of writing task 2 and you are in safe hands, then your trainer, your tutor, the institute where you're studying, or even if you're self-studying and follow a good material, a good website or a good YouTuber or a good podcaster, you must be able to figure out that this writing task 2 is based or examined or judged on the basis of a few parameters. All right. So if we talk about parameters, parameters का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब एग्जामिनर के हाथ में आपका राइटिंग का मॉड्यूल आपके आंसर शीट आती है तो वो आपके आंसर शीट में ऐसा क्या देख रहा है जिसके बेस पे वो आपको स्कोर करेगा, जिसके बेस पे you get, some of you get points, band score of 5, some of you are crossing 7, and some of you are still stuck somewhere between 6 to 6.5. So today we'll talk more about how to get to the higher band score, how to cross that border area that lies between leap that some students are struggling to take, which is from a band 7. So if you are stuck with your writing module at band 7, please stay tuned. And if in case you're having a current band score of lower than 7, still this live session of today will guide you, will help you to boost your band score. Now, let's see what are we going to talk about today. We are here about the writing task 2, that means essay. And this task 2 requires what? This requires you to write an essay, and this can be tricky because it is hard to know, the where to start and what all to include. Now, yes, there are certain formats that you need to follow, and which basically includes some hardcore basics like introduction, then your body paragraphs, then your conclusion, and your ideas going into body paragraphs. If I talk about introduction, then you know that you need to initiate your task 2 with a general statement. That means a brief idea, a one liner about what the topic of your writing task 2 is. And then you paraphrase the question prompt, and at the last there is thesis statement. So yes, you're aware of the format, but is it only the format that is being taken care of when you are being scored or judged? No, certainly not. So it becomes difficult to grade the paper, as students, that writing task 2 is an essay. Okay, so essay क्या होता है, किसी ना किसी टॉपिक पे फोकस्ड होता है. अब वो टॉपिक हर पर्सन के अपने अपने व्यूज होंगे, ऑलराइट, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, उस अपना नजरिया है उसको देखने का, अपनी नॉलेज बेस होगा कुछ जिसके बेस पे आप एक अच्छा कंटेंट बना पाओगे. सो डेफिनेटली दिस टास्क 2 इज ओपिनियन बेस्ड, मोर ऑफ ओपिनियन बेस्ड. ऑलराइट. So thus writing task 2 is assessed on the basis of 4 criteria. There has to be a certain set criteria, a certain protocol which needs to be followed by the examiners, even because at the end of the day even they are answerable. Because if you go for evaluation, then again your parameters and everything is checked again, if the examiners have been efficient and accurate in marking your score or something. So they also have to follow a certain set of parameters, a certain format which they would be utilizing to give you a good band score, a good, or again depending upon the prompt, depending upon the your attempt, how you have written your essay, which comes under task response. Now it is the response of yours, how you're managing that essay, how you are prioritizing your ideas, whether you are taking care of cohesion or coherence. Now what is cohesion and coherence? Task response, I told you, based upon your ideas, your
content, your knowledge base, and your opinions. All right. So this all these four parameters, which are task response, cohesion and coherence, lexical resources, grammatical range and accuracy. Now all these four parameters, they carry equal weightage of 25%. All right. So ऐसा नहीं है कि you are only judged on the basis of your ideas. Some students have a misconception that अगर उनको ऐसे में पॉइंट्स नहीं आते हैं या ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस टॉपिक के बारे में या ज़्यादा लिखने के लिए कंटेंट नहीं था. All right, no doubt you have to stick to the word limit, which is 250 words at the if you talk about the minimum level. But it is not the only criteria that you are being assessed for. You are being assessed for four different parameters, out of which one is task response, which includes your idea generation, definitely your brainstorming, your capacity, your capabilities. But then again, there are other three also. Now, what is cohesion and coherence? Coherence means priorities. How priority wise you have well laid your ideas in your essay. All right. So आपने रेलेवेंस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वाइज अपना टास्क के आइडियाज को किस तरीके से प्लेस किया हुआ है, दैट इज व्हाट इज नोन एज कोहेरेंस. कोहेजन मींस हाउ वेल यू हैव बाइंडेड द टेक्स्ट. ऑलराइट. एंड बाइंडिंग के लिए व्हाट वी हैव कनेक्टर्स. ऑलराइट. एंड सो दिस इज द थिंग दैट कोहेरेंस एंड कोहेजन आर आल्सो टेकन इनटू केयर. जिसके लिए हमारा फॉर्मेट है, जिसके लिए हमारे पास हमारे कनेक्टर्स हैं, जिसके लिए हमारे पास हमारे आइडियाज अकॉर्डिंग टू रेलेवेंस एंड प्रायोरिटी हैं. थर्ड, इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड पैरामीटर, देयर इज इट इज लेक्सिकल रिसोर्स. लेक्सिकल रिसोर्स इज नथिंग बट our vocabulary bank. Now, how well you are able to use your vocabulary, which is topic restrictive. All right. For example, if the topic is about pollution, you must be able to get hold of certain environmental certain terminologies that are restrictive to pollution. For example, global warming, greenhouse emission, greenhouse gases, ozone layer, pollutants. So these are the vocabulary words which are restricted to the topic of the essay. So that is what comes under lexical resources. The variety, the upper dimension that you could take on hold to when it comes to your vocabulary. You can use your synonyms, you can use good words, you can use a fancy vocabulary also, and even simple vocabulary that is just restricted to the topic of your essay would also just work fine. Now, talking about the last, and trust me, you guys, the most important parameter, which is grammatical range and accuracy. Now what happens is कि पहले तीन पैरामीटर्स जो है आप उनकी टेक केयर कर सकते हो इफ यू, because you are being continuously fed with all these things on daily basis in whatsoever institute or whatsoever trainer you are whomsoever trainer you are studying with, okay, from. टास्क रिस्पॉन्स, ओके. टास्क रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, इन्वॉल्व्स कंटेंट आइडिया. आप हर रोज क्लास में या इफ यूर सेल्फ स्टडिंग आप रोज कोई ना कोई टॉपिक कर रहे हो, सो डेफिनेटली यू आर एड दोज थिंग्स आर एडिंग अप टू योर नॉलेज बेस. ऑलराइट. तो आइडियाज आपको रोज आप रीड भी कर सकते हो, ऐसे आप आइडियाज ले लोगे. डन विद cohesion and coherence. All right, formats and connectors and the list of the conditions that you need to follow while you sit down to pen down your essay, वो भी आपको ट्रेनर्स जो हैं वो अवेलेबल करवाए जाते हैं. लेक्सिकल रिसोर्सेज, ओके, आप अच्छे अच्छे वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी अच्छी अच्छी लर्न कर लोगे. राइट. नाउ हाउ विल यू मैनेज दिस grammatical range and accuracy is really, I would rather say it is the hardest of all, and a lot of practice is required. Trust me, a lot of practice is required. You have to be mindful, you have to plan, you have to take care that am I mentioning the appropriate range that needs to be there in my essay for me to take a leap from 7 and above. क्या उसमें सारे के सारे उतने मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वेराइटीज, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज कर दिए हैं. सो यू हैव टू बी लिटिल cautious, careful that whether you are using all the types of sentences, if not all, at least more than 4 5 different type varieties you have to include in your essay type. So in if I'm talking about the last parameters, that is grammatical range and accuracy, if you closely look at it, इसमें दो चीजें involved हैं. The first is grammatical range and the other one is accuracy. Now what is the difference between the two? Range means variety, accuracy means
एफिशिएंसी, आप कितने एक्यूरेट हो, कितना सही उसको कर पा रहे हो। अब सही तो हम मैनेज भी कर सकते हैं। जब हमने टेंसेस सीख लिए, हमने वर्ब सीख लिए, वी नो ओके दिस इज माय प्रेजेंट टेंस, आई विल बी यूजिंग डू डज इज एम आर ओवर हियर, ओके दिस इज माय पास्ट टेंस, आई विल बी यूजिंग डिड, आई विल बी यूजिंग वाज प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑलराइट। यू आर एबल टू एक्यूरेटली यूज, आपने एक्यूरेसी पूरी की पूरी टेंसेस जितने भी यूज किए करेक्ट यूज किए, बट अगेन आपका जो एक छोटा सा हॉल्ट, एक फुल स्टॉप और अ कॉमा तब लग जाता है जब आप रेंज इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। नाउ व्हाट डज रेंज मीन? माय फोकस ऑफ टुडेज लाइव प्रेजेंटेशन इज मोर ऑन द ग्रामेटिकल रेंज। Let's move on. All right, so the most common mistake aajkal students, you know what they are being told most of the times is that okay, go ahead with short and simple. I would not say that it is a, you know, mistake or misguidance. No, it's not that. It's you know, a tip, a kind of help for those students जो बहुत weak है, like somewhere they are around the band let's say 4. ऑल राइट, फॉर देम टू इनिशिएट, इनिशियली हम उनको ये गाइड कर सकते हैं कि ओके आप छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, ताकि एट अ लेटर स्टेज वी डेफिनेटली हैव टू लेवल देम अप ऑल्सो। उन स्टूडेंट्स को भी हमें लेवल करना पड़ता है, बट इफ यू थिंक कि सिर्फ और सिर्फ ये टिप आपको बैंड स्कोर अच्छे दिला पाएगी, वुड टेक यू समवेयर अबव 6 और 6.5, नो इट्स नॉट गोना हैपन। It is not always the strategy to be followed that be precise, be simple, be short, be very you know, be easygoing in your type of sentences that you're using. That will not work for you if you are looking to score somewhere above 7. All right, because see, short and simple, okay, your ideas are being good, very well depicted from the content that you are mentioning, but then again वो डिफरेंस जो आता है कि एक बैंड 6 और बैंड 7 और बैंड 8 वाले में, डू यू थिंक कि बैंड 6 या 7 वाले ने कुछ जो सेंटेंसेस यूज किए होंगे उसने गलत यूज किए होंगे? नो। एंड व्हाट डिड इट टेक, ऐसा क्या लगा कि 6.5 और 7 से लेकर 8 और 9, इवन 9 बैंड्स तक? यस स्टूडेंट्स, यू कैन गेट अ बैंड 9 इन राइटिंग if only and only if you take care of your grammatical range, because जब आप बैंड 7 और अबव के ऑलरेडी एक लेवल पर पहुंच जाते हो, बाकी चीजें यू नो यू somehow or the other you have an upper hand on that. आप वोकेबलरी मैनेज कर रहे हो वेरी वेल, दैट इज वाई आप 7 पर हो। आप ग्रामर करेक्ट यूज कर रहे हो, दैट इज वाई आप 7 पर हो। ऑलराइट, आपकी जो रेलेवेंस है, फॉर्मेट्स है, स्ट्रक्चर है, ऐसे को आप ठीक कर रहे हो उसको, बट वेयर यू आर लैकिंग इज grammatical range. And most of the students, 90% of the students are not aware of this parameter, that how crucial this parameter is in order to get a good band score for your IELTS, especially when it comes to writing task 2, because here I am talking about task response, not task achievement, because task achievement is a parameter that is being taken care of when you sit for your IELTS task 1. All right, let's move forward. So yes, they say that you'll be surprised to know that this is the worst IELTS writing tip, task 2 tip to follow. No, it's not actually the worst, but it is a tip when you are initiating your task. Definitely, if you want a leap, you have to do away with this ideology that okay, let's be short, let's be simple, let's use all the simple and happy-go-lucky sentences. No, that's not happening. All right. So how can we rectify this mistake? Now, what is the solution that we need to take care of over here? See, students, as I told you initially also, that writing task 2 is not just about showcasing your ideas or understanding of the task, but it is about a variation of the sentence formation that you're, you know, utilizing with your writing style. Now, 4 parameters were there. If you remember, I told you task response, cohesion, coherence, lexical, and then last one was grammatical range and accuracy. So, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ के बेस पर आपको स्कोर नहीं किया जा रहा, देर आर अदर 3 पैरामीटर्स ऑल्सो. So examiner will not only be judging you on your knowledge, though you should be logical enough in your writing, but the examiner will only judge you on the mentioned criteria. Now अगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप सिर्फ आइडियाज़ के बेस पे जज नहीं किए जा रहे हो, स्कोर नहीं किए जा रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप फोकस ही हटा दो अपना, कि टॉपिक के रिस्ट्रिक्टिव आपने कंटेंट्स जो है
कंटेंट है, आइडियाज है, आपने मेंशन करने हैं टास्क 2 में. दैट डजंट मीन दैट ऑफ कोर्स yes, certainly you have to be logical in what you're writing. You cannot write off the topic. You cannot write something that doesn't sound or seem relevant. All right, you have to stick to the topic, you have to be relevant, you have to be logical, but at the same time there are other parameters also which need to be taken care of. And the crucial one here we are going to talk about today, the which is the center of my attention of this live of today's, will be grammatical range. I will be more into range. All right. So everyone is aware of grammatical accuracy, but there are a few who would rather know about grammatical range. Yes, as I told you, accuracy okay, समझ में आता है. आपने जितने tenses use किए हैं, आपने जो भी verb की forms use की हैं, सब correct हैं. Whatever you have written, nothing wrong is there in it. But ये जो पैरामीटर है is very tricky, is very dicey. It is not only asking you to be perfect with your accuracy, but it is also taking a toll on you because it is getting into range also. So grammatical range का basically मतलब क्या है? Variety of sentences. All right. So जितनी variety हम sentence types. Now do you see the variety of sentence types? See this one, the variety of sentence types. नाउ अब वैरायटी यूज करने के लिए डेफिनेटली हमें सेंटेंस टाइप्स जानने होंगे, राइट? When you start showing the variety of sentence types, your score will automatically lift from 7 to 8, and you must understand the sentence structure for IELTS writing task 2 if you want to score well. So let's get into the structures and let's get into the types of sentences. But before that, let's just have a look now here what is going on in the actual when you're being marked for your IELTS. Let's understand from examiner's point of view. अब यहाँ पर दो पैराग्राफ्स हैं. अगर मैं इसको रीड करती हूँ, you also students read along with me, you will see no mistake in this text. In these two paragraph इसमें कोई भी mistake नहीं है. See, people often suffer from sickness. बिल्कुल ठीक है. This is often caused by stress. बिल्कुल ठीक है. This essay will discuss the main causes of stress related sicknesses. Okay, perfect. इसमें अच्छी vocab भी use की है. Variety I would say is lacking, but simple hai, but okay hai. These include longer working hours and increased job pressures. Okay. This essay will also suggest solutions to these problems, such as improving one's work-life balance and diet. So format proper उसने follow किया हुआ है. लास्ट सेंटेंस में उसने थीसिस स्टेटमेंट यूज किया कि दिस एसे विल डिस्कस दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला. नाउ पीपल आर वर्किंग लॉन्गर आवर्स दैन एवर बिफोर. और राइट, उसने जब बॉडी पैरा दूसरा स्टार्ट किया उसने उसको इंट्रोड्यूस कराया है, उसने टॉपिक को टच किया है दैट दे आर वर्किंग लॉन्गर. इन एडिशन दे हैव मोर जॉब प्रेशर्स. इन एडिशन ओके, उसने कनेक्टर भी यूज किया है और दूसरा पॉइंट कराया है जॉब प्रेशर्स का. फर्स्ट वॉज वर्किंग लॉन्गर आवर्स, सेकंड इज जॉब प्रेशर्स. पीपल विलिंगली प्लेस, विलिंगली, नाइस, गुड वोकैबुलरी. Place themselves, okay, pronoun is also used really well, under these favorable conditions. Demonstrators, this is also good. So grammar is all fine here. Now the workforce is a competitive domain. Oh wow, a competitive domain. Workforce, lexical resources तो बहुत ही अच्छे हैं इसमें. For example, instance के लिए भी a good connector. Some people aspire to climb the corporate ladder. So for me, the lexical resources is perfect here. All right. Aspire, corporate ladder, competitive domain, willingly, job pressures, all is good to go. They want to gain high status and high paying jobs. This often results in mental and physical suffering. They have to work overtime and take on additional roles. This can be stressful. So मुझे इस टेक्स्ट से पता चल रहा है कि बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस एंड दे आर टॉकिंग अबाउट वर्क and the job pressures. Why people are working for longer hours, why stress is there, what do they actually want. They want to have a high status in the society. They have to have they want to have more salaried careers, and they want financial stability is okay, but this is causing suffering. Why? Because it is also having deteriorating effects such as mental and physical suffering. Okay, good. These two paragraphs I find them beautiful, with no error at all. Everything is good to go. But अगर ये दो पैराग्राफ्स एग्जामिनर के सामने हैं, वो इसको कैसे मार्क करेगा? लेट्स सी. Examiner is gonna score
if I am now here only talking about grammatical range and accuracy, इसमें उसने उसको accuracy के 9 marks दिए हैं. As I told you, everything was perfect. Demonstrators, conjunctions, pronouns, lexical resources, everything was good. Sorry, and not to mention lexical resources there. Every aspect, every part of speech that was there in the uh, text over there was accurate. So accuracy के 9, but range के 4. Oh my God. Why so? Why did they give this student who attempted, a candidate who sat for his or her exam, write a perfect, well-to-do, uh, 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 decent content is there, and but range के लिए, grammatical range के लिए उसको क्या मिला है? Only 4, जिसकी वजह से उसके के पूरे ग्रामर के स्कोर्स उसको बैंड मिले हैं उस पैरामीटर में 4, only 4. Now do you see this? Do you see why it is said that IELTS की राइटिंग में 7 and above लेना बहुत मुश्किल है? Here is where the students get stuck. This is where the problem is lying. Range. Now let's see, उसने रेंज को डिफाइन करते हुए 4 बैंड उसको दिए हैं, उसका बैंड पैरामीटर, बैंड डिस्क्रिप्टर्स. नाउ if possible, and if you guys think that I should make my next live session about band descriptors, so please comment in the type it in the comment section below, and let me know so that I could specifically make a live session about the band descriptors. Now here if I see the band descriptors, if I see band descriptors क्या होते हैं, वो एक set guidelines है जिसके तहत the examiners are telling you that what we are going to be looking for. If we give you 4, इस वजह से हमने 4 दिए हैं bands. अगर हमने आपको 5 bands दिए हैं, this is the prime reason why you're being given 5 bands. All right. Now ये examiner क्या कह रहा है कि इसको उसने range में 4 क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं कि uses only a very limited range of structures with only rare use of subordinate clauses. Oh my God, do you see? डू यू सी कि उसने एक पार्ट ऑफ स्पीच डायरेक्टली स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर आपने 4 या अबव लेने हैं, यू हैव टू एटलीस्ट यूज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. नाउ नाउ जस्ट सी स्टूडेंट्स, अगर आपको पता ही नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, if your trainer, your instructor has not told you to use subordinate clauses, to use variety of sentences, तो आप अपने वहीं पर अटक जाते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बैंड्स को अपने इम्प्रूव कर सकूं. So today I am guiding you about this thing, that nobody will be able to dispense it out to you in the first instance itself, that this is where the problem is lying. You have to take care of the band descriptors. आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप जिस तरीके से भी अपनी स्टडी करें, let it be self study or in any institution or online or offline classes, whatsoever the case is, please ask them, or you just contact us and we'll be guiding you about how to structure out your plan out your exam preparation. So please ask them for band descriptors. Band descriptors are the ultimate savior for you guys if you're struggling, if you're stuck at a certain band score. Now वो उसने उसको 4 क्यों दिए हैं? उसने डायरेक्टली कन्वे कर दिया है that okay, subordinate clauses नहीं यूज करना और बहुत ही limited range of sentences है. Now range, do you see this? Variety, structure, clauses, types, जिसकी वजह से इतना बढ़िया टेक्स्ट लिखने की के बावजूद भी इस स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ 4 स्कोर की मिला है ग्रामर में. तो इसका ओवरऑल स्कोर क्या हो जाएगा? टास्क रिस्पॉन्स उसने बहुत अच्छा दिया है, उसने आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे मेंशन करवाए थे, उसको टास्क में रिस्पॉन्स में 8 स्कोर्स मिला है. स्ट्रक्चर उसका परफेक्ट था, उसने द पर्सन यूज्ड कनेक्टर्स रियली वेल, थीसिस स्टेटमेंट वाज एट इट्स प्लेस, फॉर्मेट वाज गुड टू गो, वोकैबुलरी के बहुत अच्छे वर्ड्स थे. 8 8 8. बट ग्रामर में उसको कितने मिल गए हैं? 4. जस्ट बिकॉज उसने वैरायटी का ध्यान नहीं रखा, उसने रेंज का ध्यान नहीं रखा. सो डू यू सी दिस? उसका टोटल बैंड स्कोर क्या हो जाएगा? 7. इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट हो जिसको टास्क में 7 है, स्ट्रक्चर में 7 है, वोकैबुलरी में 7 है, बट ग्रामर में 4 है, उसका स्कोर विल ड्रॉप डाउन टू 6. नाउ डू यू सी दिस कि ये ग्रामर रेंज, ग्रामेटिकल रेंज इज द थिंग वेयर यू आर गेटिंग स्टक माय स्टूडेंट्स. दिस
is the hurdle that you have to cross, and everything will be perfect. Because अगर आप बाकी पैरामीटर्स को उन पर इफ़ यू आर हैविंग अ विन विन ओवर दो ऑल दोज पैरामीटर्स, आप उन पर पूरा अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया है आपने, तो अगर आप इस पैरामीटर पर भी होल्ड कर जाते हो, देन यू nobody can stop you even from getting band 9 in writing. So what is the super tip over here? Super tip is use a wide variety of sentences in your essay. So wide variety and sentence type will be the focus of my attention for the remaining live session of today's. Now let's see how many types of sentences are there. Wow, there are 6 different types of sentences. और आप जब लिख रहे हो अपना टेक्स्ट, आई नो 98% of you while you write down your essay, यू आर नॉट अवेयर कि आप जो सेंटेंस लिख रहे हो वो किस टाइप का सेंटेंस है। तो अगर आप अवेयर ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके राइटअप में आपका करंट लेवल क्या है, कि आप कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज कर पा रहे हो, तो इमेजिन कि आप कैसे आप वो स्ट्रगल जो है वो चलती रह जाएगी। सो pro tip again, just to emphasize again on that very advice that I gave you earlier also, please be mindful of the range of the variety of the sentences that you are using in your writing tasks. So 6 different types of sentences, namely simple, compound, कॉम्प्लेक्स। अब कई स्टूडेंट्स ने सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तो सुन रखा होता है, बट पैसिव, क्वेश्चन एंड कंडीशनल सेंटेंसेस दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज अदर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिनको आप यूज करके और वैरायटी ला सकते हो। So let's get into the intricacies and see in depth that what these sentence types actually are. Okay, what is a simple sentence? Simple sentence क्या होता है? जिसमें एक आइडिया हो। Now idea means एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जो आपका क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है, द टॉपिक ऑफ योर क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट शुड टैक्स शुगरी ड्रिंक्स। गवर्नमेंट को जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, सच एज सोडा ड्रिंक्स होती है, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोक है, there's Fanta, there's Pepsi, all such sugary drinks, okay, जो आजकल बहुत कंज्यूम हो रही हैं, स्टिंग इज देयर। सो दीज शुगरी ड्रिंक्स, इन पर टैक्स लगा देना चाहिए। ओके, सो यू बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आपने एक सेंटेंस ऐसे बनाया, शुगर मेक्स पीपल अनहेल्दी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस आपने इसी क्वेश्चन के लिए लिखा, दैट पीपल गेन वेट फ्रॉम शुगर, लोग क्या करते हैं, उनका वेट जो है वो बढ़ रहा है उसमें, उन ड्रिंक्स में जो शुगर है उसकी वजह से, और ये शुगर लोगों के टीथ को हार्म करती है। नाउ देयर आर 3 different sentences which are independent, which are separate. If you see 3 sentences, 3 full stops, मतलब 3 simple sentences यहाँ पर हैं, जहाँ पर sugar makes people unhealthy, people gain weight from sugar, and sugar harms people's teeth. Now sugar makes people unhealthy में subject, what is it? Sugar. Makes verb, people, object. Again next में people, subject, gain, verb, weight, ऑब्जेक्ट। नाउ इफ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो पॉइंट है, ये एस्पेक्ट है, समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से हम उसको सेग्रीगेट करते हैं, हमें पता कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट in the comment section below and let me know, so that again I can be some more of some more help to you guys and make another live session, another video for you guys, which would solely be focusing on, जिसमें मैं सिर्फ ये आपको बताऊंगी कि सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट किस तरीके से होती है, कंपाउंड में किस तरीके से होती है। हियर टुडे आई एम फोकसिंग ऑन मोर ऑन ग्रामेटिकल रेंज, सो दिस हैज टू बी अ लिटिल प्रिसाइज। ऑलराइट, तो इन 3 सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, एक ही ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स वन आइडिया। आई टोल्ड यू वन आइडिया मीन्स वन सब्जेक्ट वर्ब एंड वन ऑब्जेक्ट। सो ये 3 अलग अलग डिफरेंट सेंटेंसेस है, बट सिंपल सेंटेंसेस हैं।
कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में दो आइडियाज आ जाते हैं जिसको हम क्लब कर देते हैं। अब दो आइडियाज को क्लब करते हैं एक ही सेंटेंस में, यू सी एक ही फुल स्टॉप है, बट बीच में डेफिनेटली अब दो आइडियाज है, उनकी उनको बाइंड करवाने के लिए कोई ना कोई वर्ड चाहिए होगा हमें। ऑलराइट, और ये वर्ड्स जो यूज हो जाते हैं दो आइडियाज को क्लब करवाने के लिए, इनको हम कहते हैं कंजंक्शंस। सो कंजंक्शंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन योर ग्रामेटिकल रेंज। अगर आपने सेंटेंस वैरायटी सीखनी है, आपको कंजंक्शंस भी सीखनी होंगी, आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी सीखने होंगे। सो कंपाउंड सेंटेंस में एज आई टोल्ड यू टू आइडियाज आर देयर। अब इसमें भी उसने बात वही की है कि शुगर मेक्स पीपल अनहेल्दी, बट उसने क्लबिंग की है, तो इट हार्म्स टीथ, और सेंटर में उसने वर्ड यूज किया एंड। नाउ एंड इज अ excuse me guys, and is a conjunction. So this is compound sentence, two ideas clubbed together, conjunction बीच में place हो गई। टॉकिंग अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होता है, दो या फिर दो से ज्यादा आइडियाज होंगे। अब जितने ज्यादा आइडियाज होंगे उतना ही उन आइडियाज को बाइंड करवाने के लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करने पड़ जाएंगे, सिर्फ सिंपल एंड से काम नहीं चल पाएगा हमारा। तो हम किस तरीके के वर्ड्स यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वही सेम अगर हम बात करें उसी क्वेश्चन प्रॉम्प्ट की, तो द गवर्नमेंट शुड टैक्स शुगरी ड्रिंक्स। ओके, इसमें हम किस तरीके से सेंटेंस यूज कर सकते हैं? while some people will support the tax, others will be against it. So यहाँ पर if you see that एक नया वर्ड है हमारे पास while, you see this? So while is also a type of conjunction. अब किस टाइप की कंजंक्शन है ये? प्लीज स्टे ट्यून्ड, वी विल बी रिवीलिंग इट इन द एंड पार्ट ऑफ आवर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लाइव सेशन। सो इतना यहाँ से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि वैरायटी है कि पहले में कुछ नहीं है, सिंपल इंडिपेंडेंट थ्री सेंटेंसेस हैं, दूसरे में एक सिंपल एंड आया है जो सिंपल सा वर्ड है, एवरीबडी नोज, एंड इसमें थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट करके एक स्टार्टिंग में ही एक वर्ड ला दिया गया है वाइल सम पीपल। अगर आप वाइल को हटा दें तो इसमें इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? सम पीपल विल सपोर्ट द टैक्स, स्टॉप, अदर्स विल बी अगेंस्ट इट, फुल स्टॉप। तो वो दो सेंटेंसेस सिंपल बन जाएंगे, बट अब उन दोनों को क्लब करवाने के लिए और उसका स्ट्रक्चर, to that, and later on I will also show you that how इस ही क्वेश्चन टॉपिक पे, क्वेश्चन प्रॉम्प्ट पे सेंटेंसेस इन तीन कंजंक्शंस को यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनाए जा सकते थे। यू सी ऑल दो की प्लेसमेंट देखो, सो दैट देखो, बिकॉज देखो, जस्ट ट्राई इट आउट। थिंक 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 अबाउट दैट, अगर टैक्स लगाना है शुगरी ड्रिंक पे तो कैसे आप यूज कर सकते हो? ऑल दो मीन्स हालांकि, सो दैट ताकि, बिकॉज क्योंकि। Come on, students. I know you have the caliber in you. You can do it. Try, try. Even if the ideas, अगर आपके ideas simple भी हैं, it's okay with me. Just try to use this word हालांकि, ताकि, क्योंकि. All right, so a minute is up. One more minute to go.
hope you are on your third one, because yes, a few more seconds and your time will be up. All right. So time up. I hope that you can also type in the comment section below your answers which you're making, so that I can also assess your attempt. All right. If I talk about my attempt, I would rather say that although people will benefit, companies will suffer. हालांकि लोग तो फायदा उनको हो जाएगा, पर कंपनीज को सफर करना पड़ेगा, उनको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अगर टैक्स लग गया ज्यादा, तो लोग तो उसको कम खरीदना बंद कर देंगे, उसको कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होंगी और उनका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी नहीं हो रहे हैं। बट कंपनीज को घाटा हो जाएगा, क्योंकि उनका तो प्रोडक्ट है, उनको तो इस चीज में रहेंगे, पर कंपनीज को नुकसान होगा। हम्म लेट्स सी द सेकंड वन, जहां पर आई यूज्ड सो दैट। The government should tax sodas so that the public becomes healthier. गवर्नमेंट को सोडास पर टैक्स लगाना चाहिए, सोडा ड्रिंक्स जो जिनमें सोडा हो, जिनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं जो, ताकि लोग जो है वो हेल्दी रह सके, हेल्दी हो सके, becomes healthier. So do you see beautifully this so that just blended with two different sentences? अगर हमें so that हटाना हो तो बहुत सिंपल है, एक सेंटेंस बन जाएगा द गवर्नमेंट शुड टैक्स सोडास डॉट, अगला सेंटेंस द पब्लिक बिकम्स हेल्दियर डॉट। बट हमने उसको बाइंड करवा दिया, हमने बीच में एक वर्ड लाया सो दैट, जिसकी वजह से आपका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस की वैरायटी ऐड ऑन हो गई सिर्फ एक सो दैट लगाने से। बिकॉज बिकॉज क्योंकि बिकॉज पीपल आर बिकमिंग मोर ओबीज, ओबीज मीन्स ओवरवेट से भी ज्यादा, जो बहुत जो आइडियल वेट से बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, फैट होते हैं, ओवरवेट से भी ज्यादा। ओके, सो पीपल, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग ओबीज द गवर्नमेंट शुड टैक्स शुगरी ड्रिंक्स। अब क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार हुए हैं, गवर्नमेंट को शुगरी ड्रिंक्स पर टैक्स लगाना चाहिए। सो अगर बिकॉज हटाना हो तो इन दो सेंटेंसेस को इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं, बट इनकी क्लबिंग करवाई है हमने आइडियाज की, और कॉमा भी इंट्रोड्यूस करवाया है। सो जस्ट बाय यूजिंग द वर्ड बिकॉज द सेंटेंस स्ट्रक्चर entirely changed. Now you guys must be struggling, okay, कि कैसे पता चलेगा कि हम कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं, कंपाउंड यूज कर रहे हैं या सिंपल यूज कर रहे हैं। सिंपल, इसको याद रखने का तरीका, सिंपल सेंटेंस में वन आइडिया, सब्जेक्ट वन, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट वन। कंपाउंड में इस तरीके के दो आइडियाज, मतलब एक इंडिपेंडेंटली एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला है, दूसरा इंडिपेंडेंटली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला है, बट दोनों को कंबाइन करवाया हुआ है, बीच में एक वर्ड लगेगा विच इज कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स में क्या है, टू और मोर आइडियाज है, दो से ज्यादा आइडियाज है। अब अगर दो से ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि सबके सब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपने अपने हो, कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगा, कोई डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा। ओके, सो अब मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज कर दी है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज की, and I think some of you might not be might not be aware of these two different parts of speech. Or then again, if you are guys has students having any doubt about any part of speech, anything which is not clear, just type in the comment section below, let me know, and we can, so that we can help you for making the appropriate, the requisite content that must be fed into you for the score boost up. Just let us know. All right, so complex में there are certain amount of words which will be used. अब कुछ words, कुछ निशानियां भी ऐसी हैं, like इसमें अगर आप देखें कि while है, उसमें देखें and है, इसमें कुछ भी नहीं है। and जब मैंने आपको बाद में प्रैक्टिस के लिए दिया I gave you all those, so that, because, अब ये words भी हम लर्न कर सकते हैं जो कि एक set defined कैटेगरी में आते हैं, which I will be
disclosing towards the end of my live session, so just stay tuned. Okay, so next example, next sentence type that we have is passive sentence. Passive में क्या होता है? रिवर्जन होती है, थिंग्स आर रिवर्स्ड। जो नॉर्मल सेंटेंसेस बनते हैं वो एक्टिव सेंटेंसेस, वो किस तरीके से बनते हैं? एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसी ऑर्डर में प्लेस होते हैं। बट पैसिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाता है। किसका ऑर्डर रिवर्स होता है? ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाता है। नाउ अगेन, if you are having doubts, if the active passive is not clear to you, type in the comment section below and let us know so that we can help you further with this. अगर अगर वही सेम क्वेश्चन प्रॉम्प्ट आ जाता है, गवर्नमेंट शुड टैक्स शुगरी ड्रिंक्स, तो उसका एक्टिव फॉर्म किस तरीके से होगा? कि फूड साइंटिस्ट। अब लेट मी जस्ट ब्रीफ इट आउट टू यू, बिकॉज थोड़ा सा बताए बिना आपको ये जो डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट है वो नहीं समझ आएगा। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सब्जेक्ट होता है डूअर, मीन्स काम करने वाला। वर्ब होता है काम। ऑब्जेक्ट होता है कि जो वो वर्ब है, वो काम है, किस पर उसका एक्शन आ रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। ना फूड साइंटिस्ट, नो, फूड साइंटिस्ट सब्जेक्ट है, डूअर है, पता होना एक वर्ब है। अब किसको पता है? फूड साइंटिस्ट को, दैट इज वाई वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हियर इज फूड सेंटेंस, दैट मीन सब्जेक्ट अपनी जगह पर ही है, दैट मीन्स कि वो एक्टिव। आई टोल्ड यू एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चलता है। नाउ नो, जानना, एक काम है, ये वर्ब है। दैट, क्या जानते हैं? ये शुगरी ड्रिंक्स आर एडिक्टिव। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट में सारा आ गया, शुगरी ड्रिंक्स आर एडिक्टिव। अब इसको अगर पैसिव करना हो तो शुगरी ड्रिंक्स जो लास्ट में ऑब्जेक्ट था, नो, नो मतलब वर्ब था ना, तो क्या चीज जानते हैं वो? ये शुगरी ड्रिंक्स के बारे में जानते हैं। कौन जानता है? साइंटिस्ट जानते हैं। कौन हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट? शुगरी ड्रिंक्स। अब शुगरी ड्रिंक्स और फूड साइंटिस्ट का ऑर्डर स्वैप करना पड़ेगा। उस स्वैप के लिए वो सेंटेंस कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? शुगरी ड्रिंक्स आर नोन टू बी एडिक्टिव। अब अगर आप देखो, आप यू विल बी लाइक कि ओ व्हाट जस्ट हैपेंड, फूड साइंटिस्ट तो गायब ही हो गया। बट अगेन, ये जो एक्टिव पैसिव है इसमें थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। वो कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल में डिस्कस तब करेंगे जब इफ़ यू लेट अस नो दैट you do require this type of content from us. So this is the way, just in order to brief you कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, आपको रिवर्जन करनी पड़ती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, जिसके कुछ सर्टन सेट ऑफ रूल्स भी होते हैं। अब इस एग्जाम्पल में फूड साइंटिस्ट क्यों हट गया है? This is also due to one of the rule which is being followed by the active passive part of speech over here. So just stay tuned, be connected with us to have such important information, and down the lane we'll also be discussing in detail about active passives. Now turning on to the next moving on to the next question type, I'm sorry, the sentence structure, the sentence type, which is क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। अब इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। एंड बट स्टूडेंट्स, just to let you know कि question sentence, one question sentence in your entire write up would be enough. Don't try to use it often. Don't increase the frequency of the usage of this question type. Don't do that, it's a big no no. एक बार आप इसको यूज कर दो बस, जैसा that's it, just to let the examiner know कि आपको इस क्वेश्चन टाइप की भी नॉलेज है। और जनरली ये क्वेश्चन सेंटेंस जो है इंट्रोडक्शन में आ जाता है। बट वुड अ शुगर टैक्स रियली वर्क? अब आप इसको समवेयर इन पैराफ्रेजिंग के बाद आप और थीसिस सेंटेंस के बीच में आप इसको यूज कर सकते हैं। बट वुड शुगर टैक्स रियली वर्क और नॉट will be analyzed in the upcoming paragraphs. Did you see that we utilized this question sentence type also? All right, so there is also another sentence type which is conditional sentence. कंडीशनल नाम से ही क्लियर है, कोई कंडीशन होगी और जिसमें कंडीशन आती है वहां पे इफ भी आता है। सो सच क्वेश्चन, सच सेंटेंस टाइप्स दे स्टार्ट विद इफ, अगर, इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इफ द गवर्नमेंट हैड टैक्स्ड शुगरी ड्रिंक्स अर्लियर देन वी वुड नॉट हैव एन ओबेसिटी इशू नाउ। अगर गवर्नमेंट ने ये जो शुगरी ड्रिंक्स है वो पहले ही टैक्स कर दी होती तो आज की डेट में लोग इतने ज्यादा मोटापे के शिकार हुए ही ना होते, ये इशू आता ही ना।
तो अगर हमने यूज कर लिया इफ, तो हमने एक अपना सेंटेंस टाइप यूज कर लिया है जिसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस. Now you know all the different types of sentences that must be utilized in your IELTS writing. There are 6 different types, which are, yes, come on, say it out with me. Simple sentences, compound sentences, complex sentences, passive sentences, question sentences, conditional sentences. Now how to strike a balance, ये पैरामीटर जो लास्ट वाला है ये सिर्फ एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा, रेंज की भी बात कर रहा है. अब जब हम लिखते हैं, अगर हम अनअवेयर हैं और हम सोचते हैं कि हम जितना भी लिख रहे हैं करेक्ट है, तो आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, लेकिन रेंज में आप लैक कर रहे हैं, तो ये आपकी फिगर नंबर 1 का अटेम्प्ट हो जाएगा. इफ़ यू थिंक कि आप बहुत सारी रेंज यूज़ कर लो, लेकिन अगर उसको यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम, अगर इनकरेक्ट यूजेज है, आपकी एक्यूरेसी डाउन चली गई, तो आप अब थर्ड फिगर के शिकार हैं. यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस. डेफिनेटली आपको रेंज, ये जो सेंटेंस की वैरायटी है, इसको प्रैक्टिस करना होगा, जिसकी वजह से आप इसमें एक्यूरेट हो जाएंगे एंड ओवरऑल आपकी एक्यूरेसी जो है वो भी करेक्ट हो जाएगी. सो दिस विल क्रिएट अ परफेक्ट हार्मनी, a perfect synchronization, a perfect balance will be maintained. So practice these 6 type of sentences more. Now if I talk about के band 4 से 5 तक, okay, as I told you in the beginning that this live session is definitely going to help the ones who are struggling somewhere around 6.5 or 7, but I am also taking care of the students who are somewhere at band 4 or 5. So band 4 आपके आ जाएंगे अगर आप subordinate clause use कर लो. लेकिन बैंड 5 में वो क्या चाहता है एग्जामिनर, बैंड 5 में एग्जामिनर चाहता है कि सी रीड इट, यूजेस ओनली अ लिमिटेड रेंज ऑफ सेंटेंसेस, मतलब लिमिटेड रेंज है, ओके, जो कि ऊपर बैंड 4 में भी लिखी हुई कि वेरी लिमिटेड रेंज. बट अगर आप कम से कम अटेम्प्ट कर लेते हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, ओके, अटेम्पटेशन के भी, आपको अटेम्प्ट करने के भी वो बैंड्स दे रहा है. जस्ट सी हाउ लिबरल दे आर. अगर तो आपने यूज ही नहीं किए हैं तो फिर तो आप बैंड 4 पे अटके रह जाओगे. अगर आपने यूज किए हैं बट स्टिल आप उसमें उसको सही से यूज नहीं कर पाए, वो स्टिल आपको उसके बैंड्स दे देगा, एक बैंड आप चले जाओगे. सो एटलीस्ट ट्राई अटेम्प्टिंग द डिफरेंट रेंज और वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस in your the content that you are feeding the examiner with. Now so this is very much evident कि बैंड 4 से 5 जाने के लिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ अटेम्प्ट करें. सो इससे पता चलता है वैरायटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी. आप अगर एक्यूरेट नहीं भी हैं, उसने सी मेंशन किया लेस एक्यूरेट है, वो जो कैंडिडेट है वो लेस एक्यूरेट है बट अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो एग्जामिनर उसको मार्क्स दे देगा, विच वेरी वेल शोज दैट वैरायटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी. So use the range, use variety of sentences. So I told you, I promised you guys that I will be discussing about types of conjunctions and I will be disclosing out that कौन से words किस तरीके से आप use कर सकते हो आपने simple, complex और compound sentences में. simple से compound और compound से complex जाने में. So इसमें अलग अलग तरह की conjunctions use होती हैं which are coordinating, subordinating and correlative. Coordinating conjunctions होती हैं which are used to link two words or phrases that are equally important and complete in terms of grammar when compared with each other. जैसे कि मैंने and use किया था. I told you two ideas are there. तो ये use होता है ज़्यादा compound sentence में. कंपाउंड सेंटेंस में टू सेपरेट आइडियाज हैं जिनके अपने अपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है. आपने सिर्फ उनको कंबाइन करवाना है. उनको कंबाइन करवाने के लिए जो वर्ड्स, जो कंजंक्शंस यूज होंगी उनको बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. एंड वो कौन कौन सी होती हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सून. सबॉर्डिनेटिंग कहाँ यूज होती हैं? सबॉर्डिनेटिंग यूज होती हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में, जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट होगा और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी होंगे. अब उसके बीच में यूज करने के लिए हमें चाहिए होंगे वर्ड्स सच एज ऑल्दो, एज, बिफोर, वंस, दो, अंटिल, वेदर, एटसेट्रा. ठीक है. कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? जहां पर हम ज्वाइन करवाते हैं वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस टुगेदर, जो इंडिपेंडेंट कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को ज्वाइन करवाने के लिए हम यूज करेंगे एक रिलेशन बताने के लिए. ये जैसे कि इसका नाम से क्लियर हो रहा है कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, तो ये रिलेशंस को ज्यादा डिपिक्ट करती हैं. बोथ दिस एंड दिस, ईदर दिस और दिस, जस्ट एज दिस,
So is that. Neither this nor that, not only this but also this, whether or, hardly, when, etc. So if we look at what other conjunctions are there that can be used as coordinating conjunctions, these are and, but, or, nor. कोरिलेटिव आर ईदर और, ये पेयर में यूज होती है. इफ यू सी, अगर इसका पैटर्न आप देखें तो ये पेयर में यूज होता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और. Subordinating conjunctions, I told you, which are used to hop on from the compound ones to the more complex sentences में जो use होते हैं after, before, although, though, even though, as much as long as soon as, because, since, so that, in order that, so if, lest. Lest means हालांकि. Even if, that, unless, until, when, where, whether, while. So all these words you can use. You must have an in-depth knowledge. इस लाइव सेशन में आई वॉज मोर इन टू द पैरामीटर. अगर आपको ग्रामेटिकल एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है, यू आर lacking somewhere in the knowledge about conjunctions, about clauses, about phrases, about coordinating, subordinating, correlating, and more of practicing is what you require, please do let us know in the comment section below so that we can provide you more content about that. So that's the closure for now. Thank you, students. Thank you so much for being with me. And so that I could, and it's an honor for me if I could be just of 5% of any help or guidance to you, to make you, if you were stuck somewhere, you were feeling caged, and you were not able to get hold of that band score somewhere above 6.5 or above 7, even 9. Trust me, students, please practice your grammatical range, and you can definitely get that golden 9 in your IELTS writing too.